These are the formulas of the transformers. The first one formula is for induced EMF when it's related to the number of turns. For example, in the numerical, if they ask the numericals the number of turns in a primary coil or secondary coil, then you can use this formula. And if they ask about the current in a primary and secondary coil, then you can use this formula. And for the efficiency of the formula, transformer formula is power output divided by power input. And as we know that the power output is equal, shows the PO and PI. The power output is equals to the current in a secondary and induced EMF in a secondary coil. PI means the power input and it is equals to the current in a primary and induced EMF or voltage is in primary coil. Remember that the induced EMF is also called the voltage of the primary and secondary coil or transformer. So now we start the numerical in your book 14.15. 14.15 numerical is related to the transformer. So open your books and we start the numericals. I am reading it. A step-down transformer at the end of a transmission line reduce. I think we don't need to discuss the step up and step down because in a previous classes we discussed it in detailing. So today I think it's not needed. A step-down transformer at the end of a transformer line reduce the voltage. Voltage means EMF. Reduce from the 2400 volts to 1200 volts. So we can write here the data. So here is the voltage of the 2400 volts to 1200 volts. Remember that the primary coil having the largest voltage and the secondary coil has the lowest voltage. Clear? So we always highest voltage use for the primary voltage or primary coil. Clear? The 2400 volt is for the primary voltage. So primary voltage means E P is equals to the 2400 volts and 1200 volts means voltage E in a secondary 1200 volts. Okay, now next. The power output is 9.0 kilowatt. Power output, as we know that P naught is the power output. So we write here PO is equals to, how much is it? 9.0 kilowatt. Now we convert into watt. So P naught is equals to 9 point, and you can write it as 9 multiplied by 10 raised to power 3 watt. Clear? And overall efficiency of the transformer is 95%. Efficiency is equals to the eta is equals to P naught upon Pi. So we write here that efficiency eta is equals to 95%. The next line is the primary winding has 400 turns. What is mean by the winding? Winding means किसी चीज का लिपटना, wound होना. This is the coil and this is wound.
ये सारे के सारे वाउंड हुए हुए हैं ना, कर्व ले रहे हैं। तो ये जो वाइंडिंग है कि प्राइमरी कॉइल में जो है वो वाइंडिंग कितनी हो रही है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, वाउंडिंग हुई हुई है किसी चीज के ऊपर, और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 सो ऑन इज द 400। तो क्लास वी कैन राइट हियर कैपिटल N is 400 टर्न्स। फाइंड क्या करना है आपको, हाउ मेनी टर्न्स हैज द सेकेंडरी कॉइल। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न्स किसके थे, प्राइमरी के थे। सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, मालूम करने हैं आपको। एंड व्हाट इज द पावर इनपुट, पावर आउटपुट आपको गिवन था, तो ऑब्वियसली हमें अब पावर इनपुट भी मालूम करना होगा। एंड व्हाट इज द करंट इन ईच ऑफ द कॉइल। ओके, मतलब इसमें उन्होंने क्या, ये दोनों फॉर्मूले यूज कर लिए। यहाँ देखिए क्लास कि इंड्यूस ईएमएफ विद द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने करंट भी पूछ लिया है दोनों का। तो इसका मतलब है कि पहले हम नंबर ऑफ टर्न्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब हमें दोनों का मालूम हो जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे, करंट का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि करंट कह रहे कि ईच में मालूम करना है, ईच कॉइल। तो क्या होगा, करंट इन अ प्राइमरी कॉइल एंड करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल। आई होप कि डेटा क्लियर हो गया होगा। सोल्यूशन करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल। तो देखिए यहाँ फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है क्लास, तो यहाँ देखिए हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ इन अ, या वोल्टेज कह लें आप लोग, वोल्टेज इन अ सेकेंडरी कॉइल कितना गिवन है, 1200। वोल्टेज इन अ प्राइमरी कॉइल 2400। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी हमें मालूम करना है, नंबर ऑफ प्राइमरी हमें गिवन है, कितने गिवन है, 400। लास्ट में देखिए, तो हमें यहाँ पर सब कुछ अगर गिवन है तो हम यहाँ से आराम से नंबर ऑफ सेकेंडरी मालूम कर सकते हैं, टर्म्स इन अ सेकेंडरी कॉइल। तो चले आए मालूम करते हैं सबसे पहले। ये फॉर्मूला सारे मिटा रही, आई होप आपने कॉपी कर लिया। चलिए क्लास, we know that फॉर्मूला क्या था, इंड्यूस ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल, induce EMF in a primary coil, number of turns in a secondary and number of turns in a primary. अरेंजिंग कर ले फॉर्मूले की, हमें क्योंकि यही मालूम करना है तो हम इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा NP इक्वल्स टू NS। अब देखिए क्लास, सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। इंड्यूस ईएमएफ यानी ES आपके पास कितना है, 1200, डिवाइड में आपके पास EP है 2400, और नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल आपको कितने थे, गिवन 400। चलें जी क्लास, जल्दी से कैलकुलेशन करिए, और जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास जो फाइनल आंसर मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल्स टू 200 टर्न्स। अच्छा जी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती पर प्रॉपर, तो इसलिए हम यहाँ पर
टर्म्स लिखेंगे, ये तो हमने एक चीज मालूम कर ली, ठीक है। यहाँ देखिए ये तो हमने मालूम कर लिया। अब हमें क्या मालूम करना है, पीआई यानी पावर इनपुट मालूम करनी है। पहले तो आप लोग ये जल्दी से कॉपी कर लें। ओके, अब हमें दूसरी चीज मालूम क्या करनी थी, हमारे सवाल में जो हमें गिवन है कि पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल मालूम करें। द सेकंड थिंग इज फाइंड द पावर इनपुट। सो फोर्थ हम ये लिखेंगे पावर इनपुट मालूम करना है। तो भाई पावर इनपुट का फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया था, वो किसके बराबर है जी, कौन बताएगा मुझे। द पावर इनपुट इज इक्वल्स टू द करंट एंड induced EMF in a प्राइमरी। पावर इनपुट किसके बराबर था, करंट इन अ प्राइमरी एंड इंड्यूस इन अ प्राइमरी कॉइल। तो अब मुझे बताइए क्लास कि यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास ये दोनों चीजें मौजूद है। चलिए बताइएगा क्लास जल्दी से।